लाइक योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो जैसे कि आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इंटरफेस भी वही चीज है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हमने क्या किया ना, मेथड को डिफाइन किया, और वो मेथड कहां पर यूज हुआ ना, चाइल्ड क्लास में यूज हुआ। इंटरफेस में उस तरह से है, फंक्शन हम डिफाइन करेंगे और वो यूज होगा चाइल्ड क्लास में, वो यूज होगा। तो दोनों का काम सेम है, लेकिन ये दोनों में डिफरेंस भी है। वो डिफरेंस क्या है ना, जब आप कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिफाइन करते हो, ये आपको फोर्स करता है फॉर द क्लास रिलेशनशिप। इट इज फोर्सिंग यू फॉर द क्लास रिलेशनशिप, बट इन द इंटरफेस it is not forcing you for the class relationship. In interface, it is not forcing you for the class relationship. If one or more class want to implement the same functionality, एक से ज्यादा क्लासेस अगर सेम फंक्शन को यूज करना चाहते हैं तो हम इंटरफेस यूज करेंगे। आप मान लो एक फंक्शन जो है एरिया फंक्शन, एरिया फंक्शन को मेरे पास सर्कल एक क्लास है, सर्कल भी इसको इंप्लीमेंट करना चाहता है, रेक्टेंगल भी इसको यूज करना चाहता है। जब सर्कल यूज होगा, सर्कल का एरिया डिफरेंट होगा। जब रेक्टेंगल यूज होगा तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला डिफरेंट रहेगा। तो दोनों का क्या है ना, सेम फंक्शन है लेकिन फंक्शनैलिटी वहां पर अलग अलग रहेगा। तो इंटरफेस इज जस्ट लाइक दैट। इंटरफेस में हम सिर्फ फंक्शन को डिफाइन करेंगे और वो फंक्शन जो क्लास इंटरफेस को यूज करेगा उसमें आप फंक्शन को इंप्लीमेंट कर सकते हो। जैसे कि आप एक मान लो ब्राइटनेस कंट्रोल इज प्रेजेंट इन योर लैपटॉप। आपका लैपटॉप में ब्राइटनेस कंट्रोल है और आपका जो मोबाइल में भी है, मॉनिटर में भी है। तो सारा जो क्या है ना, डिवाइस जो गैजेट है वहां पर ब्राइटनेस कंट्रोल एक्सेप्ट करता है। लेकिन देखो, ब्राइटनेस मोबाइल में भी प्रेजेंट है, ब्राइटनेस टीवी में भी प्रेजेंट है, मॉनिटर भी प्रेजेंट है। मतलब सेम फंक्शनैलिटी डिफरेंट जगह पर यूज हुआ। मेनी unrelated class are linked up with each other by using interface. Many unrelated class. Suppose we are connected in the WhatsApp group. You are from the different state, from the different location, but as I am giving you training on Java and you are taking training from Java, training of Java, so that we are connecting in a WhatsApp group or we are connecting in a group. So we are unrelated to each other. We are not knowing previously. So we have the contact like last 1 year. So that means we are contacted with each other and we are unrelated to each other. As because of Java, we are connecting in a group. Interface is like that. Interface क्या बोलता है ना, वहां पर जो फंक्शन होता है मेनी अनरिलेटेड क्लास, आप वहां पर इनहेरिटेंस पास करने की कोई जरूरत नहीं है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या है, जो फंक्शन आप डिफाइन करोगे तो वो बाउंड हो जाएगा सारा फंक्शनैलिटी देने के लिए। मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जो फंक्शनैलिटी आप डिफाइन करोगे, जो क्लास उससे इनहेरिट होगा, चाइल्ड क्लास सिर्फ इसको यूज कर सकता है, दूसरा क्लास यूज नहीं करेगा। लेकिन इंटरफेस में क्या है, अनरिलेटेड क्लास, उसके कोई लिंकअप की जरूरत नहीं है, बट आप इसको यूज कर सकते हो। Java interface is a formal declaration of such a contract in which all method contain no implementation. All the method contain no implementation. Many unrelated class can implement the same interface. Many unrelated class, those are not linked up with each other, they're using same interface. Now see that for using interface, what you have to perform? In inheritance, when you pass the abstract class, we are using extends keyword. But for using interface use करने के लिए वहां पर implements keyword use करना पड़ेगा। Okay, interface are used to define the behavior protocol that can be implemented by any class in the hierarchy. Interface can be implemented by the class that are not related to another.
Okay. Mhm. Uses of interface. Uses of interface. Declaring a method that are one or more class expected to implement. आप ऐसा एक मतलब इंटरफेस क्यों यूज किया जाता है ना, अगर एक मेथड को वन और मोर क्लास इसको यूज करना चाहते हैं तो वहां पर इंटरफेस यूज होगा. Determining an object programming interface without revealing the actual body of the classes. Abstract class क्या बोलता है? Abstract class बोलता है अगर वो फंक्शनलिटी आपको यूज करना है तो आपको इनहेरिटेंस पास करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर इनहेरिटेंस पास नहीं होगा. ओके, तो here you are not bound to pass the inheritance. Simulating multiple inheritance by declaring a class that implements several interface. एक class multiple interface को use कर सकता है. तो Java support multiple inheritance in the case of interface. तो earlier हम पढ़े थे Java doesn't support the multiple inheritance. Java support the multiple inheritance in the case of interface. Interface में ही ये आपका क्या करेगा ना, multiple inheritance पास करेगा. ओके ओके, आज हमारा लर्निंग ट्री ग्रुप में कुछ असाइनमेंट में आपको भेजूंगा, तो असाइनमेंट आप कर लेना एंड विद इन द टाइम यू सबमिट करें. चला. ओके सर. So now comes to how you have to define an interface. Interface is used to define the abstract type. Abstract means what? Abstract means it is not having any kind of body. It is only declare. It is only declare, but it is not having any kind of implementation. It is a outline contract for a class. It is not a inline. Inline contract means जब हम इनहेरिटेंस पास करेंगे उसको बोला जाएगा इनलाइन. मतलब एक फैमिली के अंदर है. ये क्या है? आउटलाइन, मतलब फैमिली मेंबर नहीं है. जो हम बोलते हैं मुंह बोला भाई, मुंह बोला बहन, so that's the thing. Okay, so that is called as the outline contract of a class. Similar to abstract class containing only public abstract method. इंटरफेस में जो मेथड आप डिफाइन करोगे वो पब्लिक रहना चाहिए. व्हाई यू हैव टू डिफाइन पब्लिक? अगर आप पब्लिक नहीं डिफाइन करोगे तो वो दूसरा क्लास में यूज नहीं होगा. It can contain the constant field. It can be used as a reference type. ये reference type में use होगा. It is essential component of many design pattern. Many design pattern में ये essential component है. In interface, we are using implements keyword. Implements keyword is used to implement an interface. The rules of access modifier. So for a method of an interface, it is abstract and public by default. ये abstract and public by default है. Cannot be declared as private and protected. वो private और protected define नहीं होगा. और abstract and public is by default cannot be declared as private and protected. Okay, private define करने से क्या होगा? वो दूसरा क्लासेस में यूज नहीं होगा. प्रोटेक्टेड करने से क्या होगा? वो चाइल्ड क्लास में सिर्फ एक्सेस होगा. ओके, सो हियर इट इज नॉट चाइल्ड क्लास. इंटरफेस से यूज करो, चाइल्ड क्लास से नहीं यूज करो. ये बड़ा चाइल्ड क्लास से यूज होगा ना. इंटरफेस से हम कहेंगे यूज करते हैं. वी आर यूजिंग द इंटरफेस दैट एवरी क्लासेस वी हैव टू यूज. For defining an interface, we have to define interface field. When you define an interface field, it is public, static, and final implicitly. By default, implicitly means automatically. In an interface, when you define a variable, it is public, static, final. Public, static means there is no other name can be present. Final means it cannot reinitialize again and again. वो public होगा, static होगा और final होगा. Okay, so now write it. Declaring interface field. ये वाला पॉइंट जो लिखा
Okay, so Oliver. Okay, so now I show you the example of interface. Interface shape. Okay. Now see that here I define a interface shape, void draw function, the rectangle implement shape. The rectangle is implementing shape. Interface shape, rectangle implement shape. Okay, so implements keyword is used for defining interface. Then the draw function. This draw function यहाँ पर declare हुआ है. यहाँ पर देखिए यहाँ पर implement किया गया. अच्छा इंटरफेस ये जो इसको कैसे कॉल किया जाएगा either you have to create a object of interface and give the reference to the rectangle. इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनाओ रेक्टेंगल क्लास का रेफरेंस दो और उस ऑब्जेक्ट में आप ड्रॉ फंक्शन को कॉल कर सकते हो और दूसरा है आप रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ और उस ऑब्जेक्ट में ड्रॉ फंक्शन को कॉल करो तो दोनों तरीका से हम कॉल कर सकते हैं आइदर आप रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ ऑब्जेक्ट में से ड्रॉ फंक्शन कॉल करो और शेप क्लास से इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनाओ रेक्टेंगल क्लास को रेफरेंस देकर उस ऑब्जेक्ट में ड्रॉ फंक्शन को कॉल कर सकते हैं तो दोनों तरीके से हम कॉल कर सकते हैं
So you're drawing rectangle. Okay. Write this program. So interface shape, void draw function, interface area, calculate function. ये दोनों फंक्शन हुआ. रेक्टेंगल इंप्लीमेंट शेप एंड एरिया, मतलब ये दोनों इंटरफेस को मैं यहाँ पर यूज किया रेक्टेंगल क्लास में. रेक्टेंगल इंप्लीमेंट शेप एंड एरिया. तो ड्रॉ फंक्शन इट्स showing you drawing rectangle, calculate it is showing you calculating. So now I am creating a object of rectangle class. rectangle class का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और shape dot draw जब कॉल किया तो मुझे दिखाया drawing rectangle. shape dot calculate जब किया दिखाया calculating. Okay. Drawing rectangle and calculating. Okay. मतलब यहाँ पर दो इंटरफेस यूज किया, मल्टीपल इनहेरिटर. वन इंटरफेस इज यूज, मल्टीपल इंटरफेस. ओके, राइट.